It takes courage, guys. It takes courage. Hello, guys. Hi, and welcome to my channel. So, यार मुझे लगता है कि यार मैं ब्लॉग कर नहीं सकता. I don't know. It was like I don't know. I mean, I was like a pretty bit scared. I don't think I can do vlogging, but I still want to try. It's not that I didn't try earlier, but मुझे करना है यार. बट लगता है मन में एक हिच है और उस कारण से मैं कर नहीं पा रहा हूँ. तो लगता है कि मैं कर नहीं सकता व्लॉगिंग. आज भी मैं रोड पे गया था, बट इट वाज सो मच ऑफ रश, सो मच ट्रैफिक, एंड आई एम इन कलकत्ता एट द मोमेंट. तो यहाँ काफ़ी क्राउडेड हो जाता है और बहुत गर्मी है, अबाउट 42 degrees. And so ultimately, because I had to start my vlogging today, so यार आज करना ही था, आज कुछ पोस्ट करना ही था और आज मुझे कुछ बनाना ही था. तो मैंने सोचा क्यों नहीं स्टार्ट करें आज ही से. तो कह नहीं सकते, बट मैं वापस कल ट्राई करूँगा. मैं एवरी डे ट्राई करूँगा. I have to come out of this fear, the mental block which I have in my mind, like how you feel when people are continuously watching you. And I really admire all the vloggers around the world, even in India, and it takes a lot of courage to start doing some kind of serious vlogging. But I still think that people can start, and लोग कर सकते हैं. कितनी सारी चीज़ें हैं जो दिखा सकता हूँ आप लोगों को, बट आज ये चीज़ पॉसिबल था नहीं मेरे लिए. मुझे लगा नहीं कि मैं कर पाऊँगा ठीक से. सो आई डोंट नो, बट आई विल जस्ट ट्राई माय बेस्ट एंड आई विल कीप गोइंग. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल. आज यार मैंने बहुत ट्राई की व्लॉग बनाने की, बट मैं बना नहीं सका क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे काफ़ी घबराहट हो गई थी एक से. एक वो हिच रहता है, एक वो मेंटल ब्लॉक आ जाता है जो कि मैं कर नहीं सका. बट आई एम डिटरमिन्ड दैट आई विल पोस्ट वीडियो एवरी डे फॉर यू गाइज एंड from wherever I am around the world, wherever. At the moment I'm in Calcutta, so फ़िलहाल कलकत्ता से ही होगी. बट जितना भी मैं आपको शेयर कर पाऊँगा उतना मैं शेयर करूँगा. और मेन चीज़ है ये पब्लिक फेयर, और जो एक मेंटल ब्लॉक रहता है वो चीज़ हट जाए. जब हौसला बढ़ जाए तो फिर हम वो चीज़ को कर सकते हैं. सो आई नीड टू ओवरकम दिस, एंड आई गेस बहुत सारे व्लॉगर्स या जो करना चाहते हैं लोग, आई बिलीव एवरीबडी इज़ टैलेंटेड, एवरीबडी हैज़ दैट यूनिक टैलेंट एंड दैट यूनिक थिंग टू कैरी फॉरवर्ड देयर ideas and the way they see the world and that they want to present the world. They would like to do, and they can do, but the only thing is when it comes to the mental block where they're not able to overcome, और वो आगे नहीं बढ़ सकते उस चीज़ को लेके. सो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है जो कि मेरे साथ भी है. सो आई बिलीव बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट करेंगे उस चीज़ को लेके. और फ़िलहाल तो मेरे व्लॉग्स गंदे बनेंगे. मुझे पता है कि मैंने काफ़ी सारे व्लॉगर्स के व्लॉग्स देखा हूँ और रेगुलरली देखता हूँ, इंडियंस एंड फॉरेनर्स, बहुत सारे. एंड as I mentioned before, I really commend them for the work they are doing. They're doing an amazing work, and it takes courage, guys. It takes courage. I mean, for some people it's so simple to just come in front of the camera and just be like natural, but for me you can say it's a big task. It's a big task to overcome. So उस चीज़ को मुझे आगे लेके आना है और उस चीज़ को मुझे करना है. बट आई एम डिटरमिन्ड कि
मैंने सोच रखा है यार कि मुझे हर दिन कुछ ना कुछ तो बना के आपके लिए डालना है जो कि मीनिंगफुल हो। और आई थिंक एज टाइम गोज़ बाय आई विल बी मच बेटर, आई विल बी मोर stable, and I will lose kind of fear, the public speaking, and feeling odd about myself carrying the camera in my hand, and uh, just being there with my camera and just ready to click and ready to shoot for you guys. So I need to overcome that, and I will try to do that. So वो चीज़ होगी, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए हो सकता है, बट एनीवेज वेल इट्स pretty cloudy weather. It was very hot. अभी शाम होने वाली है. I did, मैं आपके लिए ब्लॉग तो नहीं बना सका, बट I did walk a lot, and I usually walk a lot, so मैंने काफ़ी वॉक की, और it's so satisfying, it's good for health, and today is an important day because I'm in front of you. So thank you so much, and I hope you will appreciate me. If you like my work, you can subscribe, or you can keep checking on my work and just find out if it's worth your time. um, but yeah, I will need a lot of love and support from you guys, so I hope I can expect that. So ciao, and see you tomorrow from some other place. Goodbye.